अब हम बात करने वाले हैं मोशन के ऊपर। मैंने टॉक अबाउट मोशन, व्हाट थिंग्स पॉप्स इन योर हेड कि सर मोशन में हम ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। तो व्हाट थिंग पॉप्स इन योर हेड व्हेन आई टॉक अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? जस्ट गिव मी। movement. हाँ, मूवमेंट। गिव मी सम टर्म्स के हम इसके बारे में बात करेंगे, इसमें हम इसके बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिक टर्म्स। We can talk about the speed, the ओके, velocity, the गुड, acceleration. गुड, गुड, परफेक्ट, ठीक है। सो ये चैप्टर मोशन लिखा हुआ है लोगों ने बुक के अंदर, सो इट्स पार्ट ऑफ किनेमेटिक्स, राइट? सो दिस थिंग इज कॉल्ड किनेमेटिक्स। अब किनेमेटिक्स क्या होती है वो पहले लेते हैं डिस्कस इन अ ब्रीफ मैनर। व्हाट इज किनेमेटिक्स? डज एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट किनेमेटिक्स क्या होती है? सो इट्स द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। ओके, सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स इमेजिन दिस इज योर फुटबॉल, ठीक है, एंड let's say let me just keep equality over here. This is Mashal. Mashal is playing football. ठीक है, she shoots the football and it basically moves and drops over here. And let's say this is the goal and she basically scored the goal. ठीक है, इसके अंदर we can discuss about velocities कितनी थी बॉल की, ठीक है, इसकी let's say acceleration कितनी थी, ठीक है, we can talk about इसकी हाइट कितनी, what was the maximum height it went up in the sky, in the basically sky obviously. So we can talk about the displacement over here. We can talk about कि how much time it took, ठीक है, this is point m, maximum point. Can we, हाँ, let's say how much time it took to reach the maximum point. So we can talk about, so anything, any, basically we're talking about motion विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो इसमें हम फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें हम लोग ड्राइव फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें के अंदर वी विल नॉट टॉक अबाउट एयर रेजिस्टेंस और फोर्सेस, द इंजन फोर्स, ठीक है, हाउ मच फोर्स वी अप्लाइड ऑन द फुटबॉल। तो वी कैन ओनली डील अबाउट इनिशियल वेलोसिटी, वी टॉक अबाउट वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ठीक है। सो देयर विल बी नो डिस्कशन ऑन forces, so that is why it is called kinematics. And the next, so chunk of motion we will call dynamics. Dynamics के अंदर we'll basically deal with motion with reference to force, ठीक है। So लोगों ने सिर्फ इसको motion बोला है, just to keep it simple. So in actual it is called kinematics, right? So let's start with the first thing which Mashal said, ठीक है, speed, right? तो जब भी हम motion के बारे में बात करते हैं we talk about speed. So what is speed? What is speed? Yes, anyway, what is speed? Amount of distance traveled particular period of time. Okay. Okay, ठीक है, good. So yeah, it uh you said कि it is the distance travel in a particular interval of time. ठीक है, that's correct. That's correct. Let me draw my standard example which I use for teaching this phenomena. Let's imagine you have Guwahati. ठीक है, this is my Guwahati, and let's imagine you are cruising, right? This is point A. Point A is a start way. You went to point B, and you know the distance between point A and B, right? That is, let's say D. Okay. एंड इन लोगों ने एस इस्तेमाल किया है डिस्टेंस के लिए, सो लेट्स यूज एस ताकि यू डोंट गेट कंफ्यूज। लेट्स कॉल इट एस, एंड यू टुक लेट्स से टाइम टी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सो इफ यू वांट टू फाइंड कि आप कितनी मीटर्स कवर कर रहे थे इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट बिकम्स स्पीड, राइट? So what is speed? If I just define speed in a single definition, the speed is a rate of change of distance, ठीक है। ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन सेम है। सो व्हेन मैं टॉक अबाउट रेट, सो रेट के बाद जो भी क्वांटिटी आती है, जैसे इट इट हैज डिस्टेंस ओवर हियर, एनी क्वांटिटी व्हिच इज कमिंग आफ्टर रेट इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सो स्पीड इज बेसिकली व्हाट, इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, सो इट्स डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो इन लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, मैं हमेशा डी इस्तेमाल करता हूँ। लेट मी यूज अगेन
stick to the convention, s divided by time, right? So the distance you travel and the time you took, right? So you're gonna just divide it out and you're gonna get speed, right? Achari, let's imagine now we have different types of speeds. ठीक है, we can have different types of speeds, वो मैं बता देता हूँ आपके. तो speed की we had different types. We have average speed, we have instantaneous speed, instantaneous speed. ठीक है. So अब what is average speed, what is instantaneous speed, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. Let's talk about average speed first. Okay, so is everyone here? Is everyone here? Am I audible? Yes, sir. Okay, so we were talking about speed के types and we have the first time which is average speed. So what is average speed? ठीक है. So let's imagine आपने you have the point A and you want to go from to point B and that is the direction, the path which you took is basically this. Okay, let's say you're doing a trekking and you start from here and you follow this path. ठीक है. And the total distance from point A to B मुझे पता है. ठीक है. That is SAB is let's say 4 kilometers. And I know how what was the total time which you took to travel to trek the entire distance. So you know कि TAB कितना है. Let's say this is 2 hours. ठीक है. So you know the total distance, you know the total time. So let's say even when you started to trek, you had the energy, right? You took some, let's say, chocolate bars, and you had energy. You were basically jogging, right? You started with a higher speed, and let's say फिर आप थक गए, फिर आप slow down हो गए, आपने थोड़ा rest लिया, फिर आप चले. So you just started walking, then you started jogging. ठीक है, then you took a stop. So on average, you basically travel 4 kilometers in total, and you overall time jogging that is 2 hours. So if I want to know कि what was the average speed जिस पे आप चल, you basically traveled from point A to B, उसके अंदर आप रुके भी, आप फिर भागे भी, आप walk भी कर रहे थे. So if I want to know this an average estimated values, that is called average speed. ठीक है. It doesn't include the accurate answers कि आप specific time में इतनी speed भाग रहे थे, फिर specific इस point पे आप रुक गए थे बैठ के. So it's just an average speed which gives you an average estimate कि हाँ आपकी borderline threshold speed was basically around this value, right? So so what is the formula for that? आप formula already देख चुके हैं. Formula is total distance traveled divided by total time taken. Okay. So this is the formula for average speed. You know need the total time distance. You just need the total time. Just divide it out and you get the average speed. Right? So this is the formula for average speed, which I should take over here. Right. So this is your idea of average speed. तो अगर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 4 किलोमीटर, हमें टाइम दिया हुआ है 2 hours, योर टाइम शुड बी इन सेकंड्स बिकॉज दैट इज द बेस यूनिट ऑफ टाइम. योर डिस्टेंस शुड बी मीटर, दैट इज द बेस यूनिट ऑफ लेंथ. ठीक है. तो यू नीड टू मेक श्योर बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस आपके सारे यूनिट्स आर हैव रिमूव्ड द प्रीफिक्सेस. ठीक है. एंड यू हैव कन्वर्टेड इनटू बेस यूनिट्स. सो लेट्स जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? द एवरेज स्पीड फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, राइट? सो आपके पास जो डिस्टेंस है दैट इज 4 किलोमीटर्स. तो किलो इज 10 to the power 3. ठीक है. नाउ इट्स इन मीटर्स. एंड योर टाइम वाज 2 hours, so 2 into 3600 seconds. अब ये कैसे आया? तो 1 घंटा को कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे के अंदर ये है 60 मिनट्स, मैं मल्टीप्लाई विद 60 मिनट्स. एंड 1 मिनट के अंदर ये है 60 सेकेंड, तो मैं मल्टीप्लाई विद अगेन सेकेंड. तो ये कन्वर्टेड फ्रॉम आवर्स टू सेकेंड्स. सो दिस कन्वर्जन, सो 1 hour इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 3600 seconds. ठीक है. That's how you convert from hours to seconds. So just put in the values, you get your average speed, which is around coming about. Let me just calculate it. It should be in meters per second, and it is making sense कि meter per second में आ रही है. So it's 4 exponent 3. हमजा खेल रहे हैं मिनट में मेरी. 2 into 36 minutes. So it's coming out to be 0.56 meter per second. ठीक है. That's pretty small, right? But on average it makes sense कि यार आप सही है इतनी एवरेज स्पीड पे आप चल रहे थे थ्रू आउट द हाइक ट्रैक, sorry. And then we have instantaneous speed, right? So this is an example for instantaneous speed. ठीक है. Instantaneous speed.
Can anyone explain or give me example of instantaneous speed? Instantaneous मैं spelling करता हूँ, spelling mistake again. हम जब फिर मुझे बोला था कि spelling सही नहीं. Instantaneous. What is instantaneous speed? Can anyone give me an idea? कि सर ये होती है. तो ये है मल्टी फ्लैश फोटो. व्हाट्स अ मल्टी फ्लैश फोटो? वो आपको आपकी एक ही लेट्स से एक ही फ्रेम की इट टेक्स मल्टीपल पिक्चर्स इन मिली सेकेंड्स आफ्टर ब्रेक ऑफ मिली सेकेंड्स. ठीक है, तो गोल्फ का शॉट मारते हैं मारते उसने सारे शॉट पिक्चर्स लिए एक ही बंदे की. सो देन उसने कंबाइन करके यू हैव अ मल्टी फ्लैश फोटो. ठीक है. सो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड? कैन यू गिव मी एन आइडिया कि इनको क्या आइडिया है इसके बारे में? एनीवन? गिव मी अ गेस, गिव मी अ तुक्का. ओके, कोई बात नहीं. So let me give you an example. It will make sense in a way. Let's say again you are driving a Bugatti. This is a Bugatti over here. ठीक है. And आप ड्राइव कर रहे हैं and आपने ड्राइव करते करते देखा, ठीक है, on your speedometer कि your speed at that particular instant is let's say 1 kph, 110 kilometer per hour. ठीक है. So at that instant, your speed of the car is 110 kilometer per hour. Similarly, let's say this is the golf ball. So जब initially इसने बॉल पे हिट किया, let's say मैं स्पीडोमीटर में लेके बैठा हूँ सामने and I will measure the speed of the shot at which it was hit. ठीक है. So point A पे बॉल हिट हुई तो मैं उस पॉइंट पे स्पीड को नोट कर लूंगा. Let's say it came out to be 210 kph, right? So instantaneous speed क्या होती है? It is a speed of an object at a particular instant of time. ठीक है. At a particular instant of time. लेट्स से आप जब गाड़ी चला रहे थे बैठ के आपने गाड़ी चलाते चलाते चेक किया आपने, हाँ मैं स्पीड 110 kph है. सो एट दैट इंस्टेंट इट वाज 110 kph. लेट्स से आपने ब्रेक आपने जंप आपने देखा कि आगे जंप है, आगे ब्रेकर है, जंप ब्रेकर है. आपने स्लो डाउन किया, देन इट विल बेसिकली रिड्यूस. लेट्स से आपने व्हेन यू वर स्टार्टिंग व्हेन यू क्रॉसिंग द जंप, ठीक है, द स्पीड ब्रेकर, लेट्स से आपकी स्पीड देन एट दैट इंस्टेंट वाज 30 kph, राइट? सो एट एवरी इंस्टेंट व्हेन यू सी योर किलोमीटर स्पीडोमीटर, सो एवरी इंस्टेंट जब आपको स्पीड दिख रही है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड instantaneous speed. So at the instant of the speed क्या है? ठीक है, that is called instantaneous speed. Any questions? Any questions? नहीं सर. Ashaq clear है? Yes, sir. Okay, good. So now we are talking about velocity, right? So when I talk about velocity, I want to introduce a new concept which is called displacement. Right? So what is displacement? तो पहले वो बात कर लेते हैं. This is something in theory which you can read, ठीक है, on your own. I'm going to give you a lecture note, तो आप देखते रहें. It will cover everything जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. So let's talk about first thing which is something new to you guys, displacement, right? So what is displacement? ठीक है. So imagine the same example which I gave you in the last slide, couple of slide back. You want to go from point A to point, right? आपने let's say there are two friends. एक दोस्त ने ये रास्ता travel किया and he reached the same point. एक दोस्त ने फिजिक्स पढ़ी हुई थी. He was pretty smart. He took this route. ठीक है. So one friend went using this route. The other friend went using this route. So which one is the smartest one? Let me name it also. The second one. The green one, right? So let's say this is Ali and this is let's say Huzafa. Okay. So Huzafa is the smartest one, right? So obviously it's the shortest path. It is going to stay towards point A to B. Okay. However, they are taking it, they are reaching the same destination, but the route is very different, right? So if I want to now describe displacement, I can describe displacement as the following thing. It is the shortest path. It is the shortest path between, so BW means between, ठीक है, between 2 points, ठीक है, and it is a vector quantity, right? Why it is a vector quantity? Because displacement always has direction, ठीक है.
displacement always a direction, so Huzafa is going from A to B, तो इसका arrow होगा हमारे पास, so it would be a basically vector quantity, it would have a certain direction, right? So let's say the displacement of Huzafa at a particular time, let's say he reached from A to B, displacement of Huzafa is 50, let's say kilometer, let's say नहीं 50 kilometer is a huge trek, बंदा मर जाएगा. Let me just keep it to 10 kilometer. It's 10 kilometer eastwards. ठीक है, let's say A to B is eastwards. क्या लिख रहा हूँ, हॉकवर्ड्स लिख रहा हूँ बैठ के, हरी पॉटर मेरे में आ रहा है. ठीक है, eastwards. ठीक है, so it has magnitude, it has a unit, it has a direction, तो displacement is a particular. ठीक है, now let's draw some difference between displacement and distance. ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दो डिफरेंस क्या है. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरिटी प्लस डिफरेंस दोनों लिखते हैं यहाँ पे. ठीक, क्या डिफरेंस. ठीक है, सो दोनों, व्हाट इज डिस्टेंस, इट्स जस्ट द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, राइट. इट हैज नो डायरेक्शन, जस्ट द लेंथ, राइट, लेंथ बिटवीन two points. You can just keep that last example in your head. And displacement is the shortest path between two points. ठीक है, पॉइंट सही. एंड अच्छा, ये तो पहले पॉइंट ना, ये मैंने टू टू की कर दिया, तो मैं बारिश में भीग के ना थोड़ा सा मेरा ब्रेन फ्रीज हो गया. एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट. This will now describe speed versus velocity in a while. And displacement is a vector quantity. ठीक है, एंड दोनों के ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, दोनों के ऐसा यूनिट सिंस बोथ आर लेंथ्स, दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, दैट इज मीटर्स. ठीक है, मीटर्स. एम, इसका भी ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, इसका भी ऐसा यूनिट हमारे पास है, इट बेसिकली मीटर. ठीक है, इट्स मीटर. ओके, ठीक है जी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आई होप इट मेक्स सेंस. नाउ वी आर शिफ्ट टुवर्ड्स वेलोसिटी. क्या होती है, ठीक है, आपको पता है स्पीड क्या होती है, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. पर नाउ शो यू द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर अगर सारे क्वांटिटी स्केलर हैं, तो द फॉर्मूला, जो क्वांटिटी आप इसके लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं वो भी स्केलर होती है. ठीक है, अगर एक भी क्वांटिटी वेक्टर होती ना, then the quantity, the speed, let's say in a parallel universe, अगर distance was a vector quantity and displacement was a scalar quantity और उल्टा होता, तो speed would have been a vector quantity. ठीक है, so now let's introduce the idea of velocity, right. तो velocity के आइडिया पे जाते हैं बैठ के हम. velocity क्या होती है भाई, velocity is now the rate of change of displacement. ठीक है, velocity, if I just write it down in a single sentence with a few words, it is the rate of change of displacement. Okay, rate of change of displacement. Okay, rate of change of displacement. ठीक है, तो यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखिए बैठ के, क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेक. ठीक है, अब वेलोसिटी जो फॉर्मूला है आपके पास, इफ आई राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, तो वेलोसिटी ऐसा होगा, एंड आई विल यूज एस बार. ठीक है, बार बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है ये, एंड डिवाइड बाय टाइम. टाइम तो दोनों फॉर्मूले में सेम था, स्पीड और वेलोसिटी के, जस्ट द क्वांटिटी ऑन द टॉप ऑन द लिमिट हैज चेंज्ड. तो आई रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट बाय एस बार. ठीक है, अब इसमें क्या है, इफ यू जस्ट नोटिस, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, hence your velocity comes out to be a vector. If any of one of the quantity is vector, the quantity for which the formula is written will also be a vector quantity. ठीक है, so velocity has direction. I gave you example in the scalar versus vector in the last class.
कि velocity of the airplane is 160 kph mile per hour eastwards. तो यूनिट में मैग्नीट्यूड है, यूनिट है और डायरेक्शन, ठीक है. सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. एंड हाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी आप अपने समझ लिया है फ्रॉम द फॉर्मूला, ठीक है. So now let me just draw some differences and similarity between speed and velocity, ताकि आपको अच्छा सा आइडिया हो जाए कि ये क्या है, ठीक है. So we have speed versus velocity. सर क्लास कितने बजे एंड होगी? When we started around 10:48, 9:40. So yeah, 10 more minutes. Do you have any other class or you want to go somewhere else? You want to party hard Sunday? Yeah. अच्छा, so बोर हो गए? Yeah. नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ठीक है सर, बोल रहे सर फंस गया मैं बोल के. नहीं नहीं, बस 10 more minutes. तो स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज द rate of change of distance, ठीक है. However, velocity is the rate of change of displacement. Okay. The second thing which you should know about speed and velocity, so speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity, ठीक है जी. ये आपने देख लिया. And then what is the third thing which you should know about this? कि speed, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास speed का? मीटर पर सेकेंड. And numerical wise it's also same as velocity, since दोनों में quantity ऊपर length है, नीचे हमारे पास time है, so it's again मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी. और what else can we draw between speed and velocity? अच्छा जी, स्पीड की टाइप्स अगर डिस्कस कर लें बैठ के. स्पीड की टाइप्स अगेन वी हैव एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है. एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. सिमिलरली इसमें भी वी हैव द टू टाइप्स, इंस्टेंटेनियस स्पीड. सिमिलरली इसके अंदर भी हैव टू टाइप्स, ठीक है. ये तो एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओ वेलोसिटी, सॉरी, कोई नहीं बता रहा कैसे हम गलती कर दी. दैट इज प्रीटी रॉन्ग. आई डू मिस्टेक्स जानबूझ के ताकि आई कैन सी कि कौन जा रहा है. हमजा ने फॉर माइक मैं बोलने ही वाला था। अब बोलने वाले. जबरदस्त. आई ट्रस्ट हमजा. अच्छा जी. तो ये दो टाइप्स हैं. अगर मैं जस्ट टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी जल्दी से, ताकि आपको आइडिया हो जाए, it would make more sense. But talk about average velocity, it would be same as the last formula which we have seen for the speed. It's average speed. So if you want to find average velocity, that is going to be same as the last thing which you have learned. It's the total displacement on to the time, right? As easy as a pie. Okay. And if I want to find again an instantaneous velocity, तो वो क्या होगी? सिमिलरली लेट्स से इफ यू आर फ्लाइंग इन एयरप्लेन एट द मोमेंट, आपने स्पीडोमीटर देखा कि ये वाज फ्लाइंग एट 160 एम माइल पर आवर ईस्ट, ठीक है. एट दैट इंस्टेंट आपकी एरोप्लेन की स्पीड क्या थी? 160 माइल पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट. अगेन इट्स द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a particular instant of time, at a particular instant of time or a moment of, ठीक है. Just talk about some other language. Now the last concept which I want to cover is acceleration. उसके बाद I would give सर you. एक मिनट पिछली वाली स्लाइड पे जाएगा? Okay, you can note it down or take a screenshot. बाद में लिख. सही है, कर लिया। सही है सर, कर लिया। Yes, Mashal. Anything you want to add on? नथिंग टू ऐड ऑन सर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अगर क्वेश्चंस
क्लास के आखिर में मिल जाए करें होमवर्क के तौर पे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। श्योर। अभी हम बेसिकली अभी हम क्वेश्चंस थ्योरी समझ रहे हैं बैठ के। आपको क्वेश्चंस अभी मैं अच्छे खासे दूंगा, ठीक है। सो आफ्टर दिस चैप्टर एंड्स वी सॉल्विंग टॉपिकल क्वेश्चंस, उसके अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये है, सही है। Or let's say I can assign a homework also if you are pretty interested in doing homework. I can assign you book के questions, ठीक है। I was trying to save your time कि we just do the important things and which can build your concepts and directly जो एग्जाम में आता है वो प्रैक्टिस करें आपको। So yeah, I can give you homework। सर एक्चुअली एक्चुअली जो क्वेश्चंस के बगैर मुझे सही समझ में भी नहीं आती मुझे, तो सही प्रैक्टिस है, सही है, क्वेश्चंस अगर होंगे तो वो ठीक है। हो जाएगा आसान। ठीक है, तो मैं आपको आज पीडीएफ भेजता हूँ फॉर चैप्टर 1 चैप्टर 2। आई विल एनोटेट, मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा इस पीडीएफ के अंदर, जो जो मैंने मार्क किया होगा अपना होमवर्क करना होगा, ठीक है, बिफोर द नेक्स्ट क्लास। मेक सेंस?